The corona crisis is not over. Cases are rising once again, and concern is over Omicron's sub-lineage XBB.1.16. Friday marks 3 years since the lockdown was imposed in the country for the first time due to the COVID pandemic. People have lost their loved ones, lives have been lost, but medical infrastructure in the country got a new dimension while learning to fight it. In this report, we show how medical systems have changed in the last 3 years. An eerie silence as cities, towns and villages across India went into a lockdown on the 24th of March 2020. The coronavirus was a new infection, and isolation and precautions were necessary to understand the virus. The only occasional sounds, the sirens of ambulances as they ripped across the streets. Fear and anxiety, and as people began to die of the virus, the government stood firm on its decision to keep the country under lockdown, even as it grappled with the extent of the danger from the new virus. Scientists and doctors started studying the virus to understand how it worked. There was no prescribed medical treatment for this never-before-seen virus, and the path to treatment was still being explored. बेड्स बढ़े, बेड्स के साथ आईसीयू की सुविधाएं, वेंटिलेटर आदि बढ़ी और ऑक्सीजन की सप्लाई। आज हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है या बेड की सुविधा उपलब्ध है। The medical infrastructure was clearly unprepared for the new virus. Testing, treatment and beds, hospitals across the country cracking under the strain, but the virus resulted in the government ramping up medical care and infrastructure like never before. Testing, which was earlier done in just one lab, is now possible in 3,394 laboratories. 63,850 new ventilators have been added to state and central hospitals. There are 8,561 pediatric ventilators in these hospitals. To overcome the shortage of oxygen, 4,135 new PSA medical oxygen plants were planned. Of these, 4,126 are operational. In April 2020, beds with oxygen support were 62,458, which was increased to 5,15,000. And in hospitals, beds have gone up from 3,64,089 to 17,93,310. At the same time, in April 2020, the number of ICU beds in the country was 29,320, which has now been increased to 1,45,014. The number of labs equipped to identify coronavirus variants was 10 in December 2020. Now it has increased to 53. सिर्फ पैंडेमिक के लिए नहीं है, जो हम डेली बीमारियों को ट्रीट करते हैं उसमें भी इसका बहुत उपयोग होगा। देखिए, जितनी भी बढ़ोतरी हुई है वो कोविड स्पेसिफिक नहीं है, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग। Corona also gave a push to new technology. Today, teleconsulting is accepted and is the norm. In the last 1.5 years, 105.7 million patients have been consulted through telephone treatment. Every day, 2 to 3 lakh patients contact doctors via teleconsulting. It also has a record of 5 lakh patients joining in a day. The service is being run by the Union Health Ministry with the help of 15,816 hubs. पैंडेमिक टाइम पे जो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वो बाकी बीमारियों में भी यूज होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वेंटिलेटर्स या मॉनिटर्स सिर्फ कोविड में ही यूज होते हैं। जैसे अभी आजकल इन्फ्लुएंजा चल रहा है या अभी डेंगू का सीजन आने वाला है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का, तो ये सारा सेटअप हमारा उसमें भी यूटिलाइज होता है। कुछ बीमारियां हैं जिनमें आइसोलेशन की जरूरत थी, जैसे मंकी पॉक्स था जिसमें आइसोलेशन की कंप्लीट जरूरत थी, तो उसके लिए हमने एक सेग्रीगेट अलग से वार्ड बना दिया, उसमें मंकी पॉक्स यूटिलाइज मतलब उसके लिए वार्ड यूज हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैन पावर, जो मैन पावर की ट्रेनिंग उस ड्यूरेशन में हुई है, लोगों को फियर निकल गया है कि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शियस डिजीज आए तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। Central government schemes have also focused on strengthening the medical infrastructure in states. एक था कोविड इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज, जिसमें राज्य सरकारों को पहले पैकेज में 15,000 करोड़ रुपए और दूसरे पैकेज में 23,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। दूसरा बड़ा इंटरवेंशन था
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम अभीम, इसके तहत राज्य सरकारों को हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां जहां गैप थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, चाहे वो अस्पताल के रूप में हो, लैब के रूप में हो, क्रिटिकल केयर यूनिट के रूप में हो, उन सबको बनाने की वित्तीय सहायता दी गई। With Parimal Kumar, Bureau Report, NDTV.